What do you think about this picture? Can you give caption to this picture, please? This is counseling and maybe breaking Yeah, or breaking. counseling or breaking bad news. But I've given caption for this picture is listening. Listening is very important communication skill. There is difference between hearing and listening. Hearing का मतलब यही है कि दूसरे के मुंह से, दूसरे के ऊँटों से आवाज़ की जो परवाज़ होती है आपकी कानों तक, इस प्रोसेस को हम हियरिंग कहते हैं। जबकि हियरिंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस, लिसनिंग इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, लिसनिंग इज़ अ मेंटल वर्क। लिसनिंग इज़ एक्चुअली इज़ द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हियरिंग प्रोसेस, वो लिसनिंग होती है। फॉर द good communication, the listening is very important. Either you are going to break a bad news or you are going to do counseling to your patient. The first thing you have to do is active listening. Today we are going to discuss about breaking bad news. Learning objective at the end of this presentation, you will be able to describe and apply a spikes protocol for breaking bad news in your clinical practice. What is bad news? What is the definition of bad news? Why we called it is bad news? Bad news, any news, any information that adversely or seriously affect one's individual view on or his future. Any news that adversely and seriously affects an individual outlook on their future is called bad news. Why is it called breaking? Breaking because it is unexpected. जो गैर मुतवक्का, that is the breaking. कुत्ते ने आदमी को काटा, पॉसिबल है, मुतवक्का है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, दिस इज ब्रेकिंग बैड न्यूज। ब्रेकिंग इसलिए कहते हैं कि मरीज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा न्यूज आएगा, अनएक्सपेक्टेड। देन व्हाट इज द रोल ऑफ क्लिनिशियन और फिजिशियन इन ब्रेकिंग बैड न्यूज? जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज है उनको एक्सपेक्टेड बनाना, जो गैर मुतवक्का खबर थी उसी को मुतवक्का बनाना। दिस इज द बेसिक रोल of our clinician, of our physician. What is the goal of the bad news interview, bad news consultation? Gather information from the patient. First goal, gathering information from the patient, transmitting the medical information. First you take information from your patient, then you transfer some medical information to your patient, provide support to the patient. And fourth one, elicit the patient collaboration and developing a strategy or a treatment plan for the future. Remember that breaking bad news is a plan work. There are certain goals
for breaking bad news consultation. Introduction. First, introduce yourself to your patient, including your full name and role. Check you have the correct patient and explain the purpose of the consultation. You have to explain to your patient and take consent, gain consent to discuss the topic with the patient and explain the discussion will be confidential. Communication skill. Display active listening throughout the consultation. Maintain an appropriate level of eye contact. एक appropriate level of eye contact होना चाहिए during the communication. And there should be the professional body language. There should be uncrossed leg, uncrossed arm, leaning slightly forward in the chair. Note to acknowledge and avoid interrupting. जब मरीज बात कर रहा होता है तो आप उन्हें इंटरप्ट ना करें. Spike is an effective way to structure your breaking bad news consultation. Today we are going to discuss this framework, Spike framework. This framework is developed by Baile and Buckman for their patients who are suffering cancer. And this is more practical and more easy and more stressless for clinician and physician in case of breaking bad news. There are 6 steps of a spike protocol or spike framework. This is acronym. S, sitting. P, perception. I, invitation. K, knowledge. E, emotion and empathy. S, strategy and summary. There are 6 steps. First step, sitting of the consultation. अब सिटिंग किस तरह होना चाहिए? क्या आप बेड साइड पे ब्रेकिंग बेड न्यूज़ कर सकते हैं? बेड न्यूज़ को ब्रेक कर सकते हैं? क्या आप कॉरिडोर में कर सकते हैं? अब पहला स्टेप है सिटिंग. द डिस्कशन शुड बी अकर इन द कंफर्टेबल, क्वाइट एंड प्राइवेट रूम. Arrange the chair at approximately 45 degree angle to each other. जो चेयर हम रखते हैं एक मरीज के लिए होता है, एक डॉक्टर के लिए होता है, तो एटलीस्ट दे शुड बी 45 एंगल. आमने सामने नहीं होना चाहिए. सही है? 45 एंगल पे होना चाहिए टू ईच अदर एंड अवॉइड फिजिकल बैरियर बिटवीन यू एंड द पेशेंट. कोई डेस्क होता है, टेबल होता है, वो नहीं होना चाहिए. कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ब्रेकिंग बैड न्यूज. इंश्योर यू हैव uninterrupted time during the meeting. You have to turn your phone and ask the patient if they want anyone to be with them. Would you prefer to have a family member or friend here? मरीज से पूछना चाहिए, मुझे आपसे कुछ आपकी बीमारी के मुताल्लिक़ कुछ बताना है. ये बात एक तसल्ली बख्श बात नहीं है, एक तशवीश की बात है. क्या आप अपने दूसरे भाई को या फैमिली मेम्बर को यहाँ बुलाना चाहते हो? यहाँ जो हमारा डिस्कशन होती है, इस डिस्कशन में वो शामिल हो जाए, या आप खुद ही अकेला सुनना चाहते हो, या मैं सिर्फ आपको ही बता दूँ? यू हैव टू आस्क. और दूसरे, अगर आपके रूम में कोई और दूसरा डॉक्टर है या स्टाफ है,
ये भी मरीज़ से पूछना होगा कि इस डॉक्टर की मौजूदगी में आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। अगर वो कहता है कि मुझे इतराज़ है इस स्टाफ की मौजूदगी में, इस डॉक्टर की मौजूदगी में, फिर आप उसी डॉक्टर को कह देते हो कि काइंडली आप यहाँ से चले जाएं। इज इट करेक्ट? दिस इज द सिटिंग। Bad news should never be broken standing in a corridor or at the bedside. This is video. Look, the attendant got hurt. अब अटेंडेंट की रिएक्शन देख लें, बिकम शॉक। Bad news should never be broken standing in a corridor or at the bedside. Breaking bad news is a plan work. ये जो पोजीशन है, जो डॉक्टर और मरीज के दरमियान देयर इज द टेबल, फिजिकल बैरियर, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज द बेड पोस्चर, बेड पोजीशन, not acceptable. And this posture is also not acceptable for breaking bad news. अब डॉक्टर को देखो, देयर इज ए क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए, सही है। अब ये क्रॉस आर्म है, यहाँ से डॉक्टर कुछ सोच रहा है, सही। और डॉक्टर ने बजाय लीनिंग फॉरवर्ड, इट इज द लीनिंग बैकवर्ड है, सही? This is a not good posture for breaking bad news. This is the correct posture for breaking bad news. अगर डॉक्टर को देखें, there is uncrossed leg, uncrossed arm, appropriate eye contact, and doctor is leaning forward. अब मरीज को सुन रहा है। This is the listening. Listening is very important. The second step, step 2, is the perception, assessing the patient perception. What the patient already knows or is expecting. दूसरे डॉक्टर ने आपको आपकी बीमारी के मुतालिक क्या बताया था? आपको अपनी बीमारी के बारे में कोई जानकारी है, आपको पता है? You have to ask the perception. What the patient already knows or is expecting. What have you been told about your medical situation so far? Or what is your understanding of the reason we did the MRI? हमने MRI करवा दिया आपका, आपको पता है हमने क्यों करवा दिया? You have to assess the perception. Ask about any symptom the patient may have been experienced up to this point. आप मरीज से पूछते हैं कि आप यहाँ दाखिल हुए थे, आपको तकलीफ क्या थी? Start from the symptom. कहता है कि मुझे खांसी था, बुखार था, सांस की तकलीफ ही थी। आप कहते हैं कि बुखार, खांसी, सांस की तकलीफी, इनकी काफ़ी वजूहात होते हैं और कॉमनली ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये सीरियस बीमारी की वजह से भी हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू एनी सीरियस कंडीशन। आपने कहा कि ये कॉमनली इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये सीरियस बीमारी की वजह से हो सकता है। इसका मतलब ये कि आपने पेशेंट को एक वार्निंग शॉट दे दिया, यू फायर अ वार्निंग शॉट। आपको वार्निंग शॉट इन द स्टेप ऑफ ए परसेप्शन स्टार्ट करना चाहिए, ताकि मरीज साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाए आपकी बात को डाइजेस्ट करने में, आपकी इंफॉर्मेशन को गेन करने में। जब आपने कहा कि ये कोई सीरियस बीमारी की वजह से भी हो सकता है, तो मरीज़ को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो उसको प्रिपेयर करेगा
कि ये सीरियस बीमारी मुझ में भी हो सकता है, किसी और में भी हो सकता है। The step 3 is the invitation. Obtaining the patient invitation, take permission from the patient. जिस तरह हमने शुरू में कंसेंट ले लिया था, ये वही कंसेंट है। I have the result here today. Would you like me to explain it to you now? मेरे पास आपकी MRI का रिजल्ट है, क्या मैं आपको बता दूं? What do you know? And how much do you want to know? आप कितना जानना चाहते हैं? The step 4 is the knowledge, giving knowledge and information to the patient. Give information in small chunks and check periodically as to the patient understanding. In the sizable chunk, you gave information to your patient. And use a warning shot. Unfortunately, I have got some bad news to tell you. I'm sorry to tell you that you have a cancer. You have to start from a warning shot. Fire a warning shot. मेरे पास जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तसल्ली बख्श बात नहीं है। आपने कहा एक तसल्ली बख्श बात नहीं है। जो मालूमात मेरे पास है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी तशवीश का बायस बन सकता है। यू आर गिविंग अ वार्निंग शॉट बिफोर यू break the bad news. You have gave the warning shot to prepare the patient psychologically to digest, to listen your information. Allow a long pause so that patient can digest information. Give time after a warning shot. जो मालूमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह आपकी तशवीश का बायस बनती है, या मेरे पास आपके लिए तसल्ली बख्श बात नहीं है, या ये MRI रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। आपने वार्निंग शॉट दे दिया। टेक अ टाइम, डू अ पास till the patient digests the information. Use simple and correct language. I'm sorry to tell you there, but the result from investigation show you have a cancer. Simple and correct language. Don't use medical jargon. अब कैंसर इज कैंसर, डेथ इज डेथ, आपको डायरेक्टली कहना है। तो डोंट यूज द मेडिकल jargon, use the simple and always the correct language. Use non-technical word. Means you can use spread instead of metastasis. You can use simple of tissue instead of biopsy. Instead of biopsy, use the simple of tissue. Don't use medical jargon. Make a simple, easy language that your patient become able to understand, become able to digest your information. The fifth step is the emotion with empathic response. Addressing the patient emotion with empathic response. Patient emotional reaction may vary from silence to disbelief, crying, denial or anger. हो सके पेशेंट कहता है कि मुझे क्यों कैंसर होता है, डिनाइल फेज में चला जाता है। हो सके पेशेंट साइलेंस हो जाता है। हो सके पेशेंट स्टार्ट क्राइंग,
एंड पेशेंट गुस्सा भी हो सकता है. You have to address, you have to pick up these emotions with empathic responses. Recognize and respond to emotion with acceptance, empathy and concern. Acknowledge the shock. मुझे भी दुख होता है, ये तशवीश की बात है. And you also can take help from religious belief. ये कुदरत की राज है. Acknowledge and reflect the emotion and body language. Do not lie when the patient asks question about the prognosis. डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है, फिर मैं कितने साल जिंदा रहूँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं. If you don't know about the prognosis, do not tell lie. आप यही भी कह सकते हैं कि हम मज़ीद आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनसे मज़ीद क्लियर हो सकता है. या हम दूसरे डॉक्टर को जो स्पेशलिस्ट है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, वो हमें बता सकता है. बट यू डू नॉट लाई. These are the few empathic statements. I can see how upsetting this is to you. I can tell you are not expecting to hear this. I know this is not good news for you. I'm sorry to have to tell you this. This is very difficult for me also. I was also hoping for a better result. हमें ये उम्मीद नहीं था कि हमने आपका MRI ब्रेन करवा दिया, हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से कैंसर निकल आया, हमें ये उम्मीद नहीं था. दिस इज द एम्पैथिक स्टेटमेंट. द स्टेप 6 is the strategy and summary. Check the patient understanding of the bad news. You have to check it and make a plan for next step. अगला हम क्या करेंगे? You have to make a plan with your patient, further investigation or follow-up or referral. And summarize. Respectfully and gently repeat any important point. Patients who are shocked or upset will not take in much information. जो important point हैं, फिर आप end में उन्हें summarize करोगे. Answer any question from patient or from their family. जो भी सवाल पूछा जाता है, आप उनका जवाब तसल्ली से दे देना. बट डू नॉट लाई. अगर आपको पता नहीं है, आप कहते हैं कि हम दूसरे स्पेशलिस्ट से या मज़ीद आपकी टेस्टिंग करके मज़ीद क्लियर हो जाता है. इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट स्पाइक फ्रेमवर्क एंड दिस इज यूज्ड throughout the world for breaking bad news. And spike framework, other than breaking bad news, it is also applied in case of a counseling. Spike protocol can be applied to give information to patient in counseling as well. For example, if you are going to explaining a diagnosis, investigation and treatment, you can also use this framework in counseling as well.